Okay, we are live again. Let me do some setup and then we're good. I hope you can listen to me. So, yes, I'm here at Python certification course from Freecodecamp और मेरा अभी तक का जो completion नहीं I want to no I will let continue the call. Okay, मेरा पाइथन सर्टिफिकेशन का लूप तक का कोर्स हो चुका है. आई एम डूइंग माई क्विज़ नाउ. अभी देखते इस क्विज़ में हमें 18 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं 20 में से. सो लेट्स स्टार्ट. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स फॉर अ लिस्ट? So variable name is equal to square bracket or whatever inside and comma separated square bracket, और ये सही जवाब है. I select this one. What will be printed to the console? Cities, ये है हमारा list और print लिखा है cities और दिया है -1. तो अपने ये वाला आना चाहिए टोक्यो. What is an iterable? It is a special type of string that can hold large amount. नहीं. It is special type of number. नहीं. It is a data type mainly used in classes and the special function. नहीं. It is a special type of object that can be looped over one item at a time. चलो ये सही जवाब है. What will the following print to the console? Okay. ये लिस्ट कंस्ट्रक्टर में डेवलपर स्ट्रिंग डाला हुआ है तो ये लूप करेगा हर इटरेबल है ये स्ट्रिंग. सो इट विल गिव अ लिस्ट with all the characters separated with the comma. So this should be the answer. Which of the following is used to get the number of element in a list? Okay, the length, number of element, कितने length कितनी है उसकी. So length function is there. length function में आप लिस्ट डालोगे तो उसका कितने मेंबर्स है उसका नंबर देगा. what happens if you try to pass in an index either positive or negative that is out of bound for a list? It will give you index error. Okay, good job. What will be printed to the console? Dessert is equal to cake, cookies, ice cream, pie. उसमें किया है print. लिस्ट डेजर्ट को स्लाइस किया है केक 1 तो 1 आएगा यहाँ पे कुकीज़ 0 1 कुकीज़ एंड 1 2 3 won't be included so it will be cookies and ice cream in a list. Which of the following method is used to add an item to the end of the list? देखो एक तो append है और पॉप भी यूज कर सकते हैं बट append नहीं डाल. ओ पॉप तो नहीं, सॉरी पॉप तो रिमूव करने के लिए append ऐड करने के लिए. What will be printed to the console? Numbers list 1 2 3 4 5 even number extend even number. Okay, नंबर्स को एक्सटेंड किया है मतलब ये जो भी मेंबर्स है वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे नॉट द लिस्ट. सो इट विल बी 1 2 3 4 5 6 8 10.
क्योंकि एक्सटेंड करता है दूसरी लिस्ट को, so that will be the answer. So which of the following method is used to insert an element at a specific index in a list? I think इसका क्वेश्चन में ही आंसर है. इंसर्ट डालोगे 2.5 गाड़ी इंडेक्स नंबर डाल दिया. What will be the printed to the console? नंबर्स हैं जो लिस्ट है 1 2 3 4 5 रिमूव 5, तो ये वाला रिमूव 5 करना है, तो एक ही जो अकरेंस है फर्स्ट अकरेंस को रिमूव कर देगा, तो आंसर वुड बी 1 2 3. हाँ, बिकॉज और वही लिस्ट को रिमूव करेगा, तो 1 2 3 4 5 5. Which of the following method is used to empty a list? Clear. What is tuple? It is method used to add a nahi. It is mutable data nahi. It is an immutable order sequence of value. Yep, immutable है, mutable नहीं है. tuple आप add remove नहीं कर सकते, change नहीं कर सकते value को. Which of the following is the correct way to unpack item from a tuple? Not this like this, not like this, not double equal. I think this is the correct. Developer is equal to tuple at least 34 developer and image. Yep, 3 items है और 3 variable name. That's correct. What will be the result of the following code? See, delete. You can't do it in tuple, so it will be type error and error. It will be create, nothing will happen. This will produce a type error. What will be the result of the following code? Python 3 index Python 3. Okay, just asking of Python का कोड 3 से 0 1 2 3. Okay, the last one 0 1 2 3 4 5. इंडेक्स फाइंड करना है ना पाइथन में. 3 से स्टार्टिंग पोजीशन है, तो 0 1 2 यहाँ से स्टार्ट होगा और the Python will be in 5th position, so 5. Which of the following function is to create a new list of the sorted value? New list, वो sort है, वो अपना जो लिस्ट है उसको ही करेगा. sorted जो फंक्शन है वो अपने को न्यू लिस्ट देगा. Which of the following is the correct way to use a for loop? So programming language जो लिस्ट है Java, Python, C++, for long for language in programming language. I think this is the correct one. Not this is not. We need a colon and then that's it. We don't need a curly or square bracket here. There is no off there, there is an in, so that's the correct one. Which of the following function is used to generate sequence of integer? Range. Which of the following function is used to iterate over multiple iterable in parallel? Zip function. Okay, yes, I'm finished. Oh wow, we got 100%. Wow, आश. तो भाई लोग, हमारा यहाँ तक का सफ़र ख़त्म हो चुका है. अब हम जाने वाले हैं डिक्शनरी एंड सेट्स
जो पाइथन में है. So let's see how it goes. 50 स्टेप्स है उसमें. फिर क्या करना है हमें? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है. Oh, nice. So I think this is the start. Let's start with dictionary and sets. Working with dictionary sets. What are the dictionaries and how do they work? Okay. What are the dictionaries and how they work? In Python, dictionaries are built-in data structure that store collection of key value. अच्छा, object की तरह जो JavaScript में होता है. They work very similar to real dictionaries, where you search for a word to find its corresponding meaning. Oh, direct dictionaries. Oh yeah, dictionaries. Sorry. With the Python dictionaries, you use a key to find its corresponding value. You should use dictionary when you need to associate value to unique keys. This is helpful when you need to find a value fast based on the key, and when you need to represent structured data. This is the general syntax of the Python dictionary. Okay, structured data dictionary is equal to curly braces, key 1, value 1, key 2, key value pair. First we find the variable that holds the dictionary. You don't necessarily need to assign the dictionary to a variable, but it's very common to do this to keep in a memory and use it later in the code. And that's followed by curly braces, which are sometimes called curly brackets. Okay, and within the curly braces there are key value pairs. So this key value pair, key 1 जो भी है वो नाम, each key is associated with a value, so you can use the key to access the value. की का काम वही है कि वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं. Okay, that's why you assign the key. After each value except the last one, there is a comma to separate the different key value pairs. So comma चाहिए separate करने के लिए. Key must be unique in the dictionary and they must be an immutable data type. Okay. However, the value can be repeated and they can be any of data type. So key must be immutable and string. Maybe you can take 1 2 3 also. Can't use list, I guess. And other value आप कोई भी यूज कर सकते हैं, immutable भी हो सकता है. Okay, we have an example of a dictionary that stores information about the margarita pizza recipe. Example code: pizza is equal to, in curly braces, name. It's a key which is immutable and it is string, और उसका वैल्यू कॉलन के साथ नॉट इज इक्वल टू, वो भी स्ट्रिंग है, मार्गरेटा पिज़्ज़ा, और यहाँ पर कोलन कॉमा सॉरी, प्राइस स्ट्रिंग इम्यूटेबल कोलन 8.9 फ्लोट वैल्यू और कॉमा सेपरेट, calories per slice string colon 250 integer comma separate value. Toppings
string immutable colon list with square bracket and उसमें है mozzarella और basil, दो ही toppings. Okay. Dictionary is assigned to a pizza variable. Okay. It has a four key value pairs: name, price, calories per slice, and toppings. Another alternative would be use dict, dict constructor, which builds the dictionary from a sequence of key value pair. This would be equivalent syntax for our pizza example. You pass a list of tuples as an argument to the dict constructor. This tuple contain the key as the first element and the values as the second. These tuples contain a key as a first element, okay, and the value as a second. So list of the tuples, okay, list डालना है तो dict construction में डाल दिया हमने okay. let's be in अपने टर्मिनल में. तो उसमें क्या डाला था, पिज़्ज़ा. हम डालेंगे dict constructor में list of tuples. सो पहले जाएगा नेम, मेरे को तो नाम नहीं आ रहा है. चीज़ पिज़्ज़ा डाल दे, चीज़ पिज़्ज़ा, चीज़ पिज़्ज़ा गया. लिस्ट है. दूसरा क्या डालेंगे, प्राइस डाला है. प्राइस तो कितना रखेंगे, 4.5, 5.99. ओके. फिर डालते हैं कैलोरीज पर स्लाइस. ओके, कितने, 230 कैलोरीज. ओके. एंड what would be last toppings. तो उसमें हम कॉमा सेपरेट में क्या डालेंगे, चीज़ एंड बेसिल. तो इसमें भी बेसिल ही डाल ही देते हैं. तो हमारा ये लिस्ट हो गया, ये कंप्लीट हो गया. टॉपिंग्स हो गया, लिस्ट कंप्लीट और डिक्ट. चलो पिज़्ज़ा, नाइस. पिज़्ज़ा ने डिक्शनरी है जो क्या है भाई, नेम, चीज़, पिज़्ज़ा. और प्रिंट करके देखो ना, प्रिंट करके देखा नहीं, वही निकल रहा है भाई, कुछ ज़्यादा नहीं. प्राइस दिया, सब कुछ अच्छा है. नाइस. Let's get back to this one. To access the value of a key value pair, you can use this syntax known as a bracket notation. Bracket notation ये तो अपने JavaScript में भी है. It's the name of the variable that holds the dictionary, followed by the square brackets and the key. भाई कोई chat वेट कर रहा है क्या? No one chatting. Let me see. मेरे में YouTube स्टार्ट तो किया है भाई, पहली बार, मतलब दूसरी बार, पर let me see if anyone is watching my channel, और सिर्फ मैं ही हूँ यहाँ पे जो अभी तक ही स्टार्ट किए हुए है. नहीं, लाइव तो है पर कोई आ नहीं रहा है.
क्या पता। नहीं लाए तो भाई क्या कर रहा है तू? अपना यूट्यूब का व्यू बढ़ा रहा है। चलो भाई देख रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कोई देख रहा है। लेट्स सी। कीप वॉकिंग ओके। आई थिंक नो वन इज चैटिंग बट लेट ओपन माय इधर चैटिंग तो नहीं हो रहा है इसलिए इट्स ओके। लेट्स सी। I think I can see. Okay, there is nothing. Is there? Keep going. Let's keep going. तो कहाँ थे हम? To access the value of a key value pair, you can use this syntax known as a bracket notation. Bracket notation जो ऑब्जेक्ट का कोई भी की डाल के या स्क्वायर ब्रैकेट में या that was same thing I think is the name of the variable that holds the dictionary and followed by a square brackets and the key you want to access within the square brackets. So here is a dictionary, the key in a square brackets. In our pizza example, if you want to access the value of a name, you would write the name of the variable pizza followed by the square brackets and the key name within the code. So pizza and the string name. This will evaluate to margarita pizza. So if we go here and we do pizza square bracket and we say name, अगर हम name डालते हैं तो cheese pizza. Good. Let's go. To update a value, you must need to add assignment operator to follow by the new value. Okay. Just we need to do like this. So हम क्या करेंगे? Pizza name and simple. नहीं तो चीज तो डालने को है cheese. Okay, that's the name. Now let's print. let me check. Okay, चीज़ पिज़्ज़ा की जगह चीज़ नाम आ गया. ठीक है, बहुत बढ़िया. तो डिक्शनरी का मतलब भी समझ रहे हैं हम. तो हमने यहाँ पे अपडेट वैल्यू किया, मतलब ये म्यूटेबल है. ठीक है. If the key doesn't exist in the dictionary, a new key value pair will be created. In recent version of Python, dictionary preserves the order of instances, and this is helpful when you need an iterator over the dictionary. Oh, okay. Let's see. ये क्या बोल रहा है कि अगर वो नाम नहीं है तो वो ऐड हो जाएगा, पर वो एडिशन लास्ट में होगा. लेट्स सी क्या डाले भाई, क्या डाले. टॉपिंग्स तो हो गया. डिस्काउंट डालते हैं. फॉल्स. ओके, लेट्स सी. यप, गॉट इट. हो गया भाई, बहुत बढ़िया. चलिए बढ़ते हैं आगे. Dictionary also have helpful method to perform common operation. The get method retrieve the value associated with the key.
Okay, like a map retrieves the value associated with a key. It's similar to the bracket notation that we just used, but its advantage is that you can set a default value so you won't get error if the key doesn't exist. So dictionary.get key default. In this example, if the toppings key doesn't exist, it will return an empty list, which is the default value that we are passing here as a second argument. But if topping doesn't exist, it will return the value. So pizza.get toppings empty array, it is as a default. If it is not there, then we can get this value. Okay, the dot keys and dot values method return a view object with all the keys and value in the dictionary respectively. Okay, okay, let's, I think I'm done here. Maybe I'm going to switch into another platform and see if I can improve my audience numbers. So that's it for me. Keep coding. Have a lovely day. Keep learning, keep coding. Bye bye.